Hi Tavish, hi Nikhil. Guys, did you get the last day recording? Okay. Yeah, Tushar. Uh, okay. So what I'm doing is like previously, like there was some issues with Zoom and that those drive links. So I'm uploading directly to YouTube. So I will just give the link for the channel to you guys. Okay. I guess that will solve the problem. So uh, okay, so yeah, like the yeah, that's one point. That's one good point. So what I'm doing right now is I'm writing the batch. Like let's say your October 21st. Then whatever the date is, so you guys can like easily filter it out, right? Will that work? So like the video name, I will put the date and the batch name. I guess that would work, right? Okay. Okay. Otherwise, I'll just share the individual links. No issues. Okay, let's come to the point. So the point is, we were done with the classes and inheritance in JavaScript. So we were talking that JavaScript एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है सो इट मीन्स दैट वी शुड बी हैविंग द फंक्शनैलिटीज की क्लास हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ये सारी चीज़ें हो चाहिए राइट इनहेरिटेंस चाहिए हमें इनकैप्सुलेशन चाहिए तो जो भी ऊप्स के फीचर्स हैं दोज ऑल वी नीड राइट सो दैट व्हाट वी सॉ इन द लास्ट क्लास ठीक है थोड़ा सा और देखेंगे उस पर ओके विल डिस्कस अ बिट मोर फिर थोड़ा दिस एंड बाइंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे मे बी काइंड ऑफ रिवीजन ओके सो लेट्स दैट वुड बी अ काइंड ऑफ रिवीजन हियर and with that so if time allows then we can start with some advanced topic okay थोड़े like interesting होने वाले हैं because we'll be moving to network calls promises okay asynchronous javascript so all these kind of things okay so but before moving to that it's very very important that we are done with the object oriented programming concepts. Okay, so what I will do is I will share the screen and also drop a message in the group so that we have started. Yeah, yeah. Oh, okay. Oh, yes, 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 yes. Yeah, please go on. Yes, yes, I remember. I remember. Okay, let me then drop a message and then share the screen. Let's take that out. Okay, so I will say, guys, we have started. Please join. Guys, session has started. Okay, so if someone has to join, they will join. Okay, let me share now. So, okay, so okay, I got the file. Let's close this. Let's close this. Okay, classes, global variable, timing function, table listeners, oops in Java. Okay, so not this one. I guess it was here somewhere. Okay, yeah. So okay, guys. If you look at this code, what like Tavish has shared with us. So if we look at this code, um, we are calling the function. So at line number one, the x is called x. The function x is called. Okay, and inside that, what we are having exactly is we are having um, a function. Okay, not a function. Basically, a for loop is there with 1 to 5, and that contains a set timeout. Okay, now this set timeout
Okay, let's take this. Just that's complete one. Let's paste it the new code. Okay, let's see this. So the function X is there, the for loop over here. Inside it, we have um, a set timeout. Okay, then okay, so there is a comment. Why is this function not printing the output after every 1 second and instead prints only the first output after 1 second? Rest four outputs abruptly. Okay, let's see this. If this is the case, okay, next is okay, so there's some console in the function. Okay, so the for okay, so this function is doing. Okay, so let me comment this one. Let's run the first function, then let's run the second function. Okay, so let's see the behavior of first function. So we are having a for loop, the set timeout, console log I. It means that there will be five set timeout with different i's, right? I guess that is what expected here. Okay, and after 1 second, and then four are abruptly. Okay, let's see this. Okay, let's attach to any HTML file. Okay, let me do one thing. So ctrlx, let me rename this to HTML. HT. Okay, let's write the script here. Okay, so we are having the script. That's it. Let's save it and uh, open, copy path. So I will paste it here. Okay, let's see the console. Okay, I will just clear this empty cache and hard reload. Okay, so one is printed after 1 second, and if we notice, there is not much of gap from 1 to 5, right, guys? Okay, so basically, okay, let's cut this. Basically, the delay we are introducing is for set timeout. Okay, now what is the time of completion of our for loop? So the time of completion of our for loop will be very less. Let's say 1 millisecond. I'm just guessing. Okay, I do like I exactly do not know what is. In 2 milliseconds, my for loop has created five set timeouts. Like I'm just getting giving a random value. Okay, because it may be faster or slower, but yeah, something around this. Guys, are you getting this point? Okay. Now the point is, if we have only 2 second delay, 2 second latency, and all five set timeout has been created inside 2 second, it means all timers are running with very less delay. Timers would start as soon as they get loaded into the execution context. So the loading, the timer, the five timers, whatever timers will be created for the functions, there will be very little difference on in them. So since they start with very little difference, so they end with very little difference. But the first one is will take 1 second, and other will. So let's say that the first was is the first set timeout let completed at one, then some other will be something like in this, and some other will be, because there is very minor difference in their starting and so on. So that's why we are getting this abruptly. Make sense? Okay, let's see what we have next in next function. So let me comment this now. Okay, not HTML, the function. So I will comment this now and I will uncomment. Guys,
Nikhil, Tushar, guys, you are getting the point. What happened in the first function? Okay, let's see the second one. So what Tabish has here is there's again a loop. Okay, the same functions, everything is same, but with a little difference. Every time whatever set timeout is fired, let's say again same thing happens. In 2 seconds, all five set timeout get fired. Okay, but they, if you have a careful look here, the delays are different. Okay, this is not the same delay we are having. So even though they are starting, this starting is same. The starting is same. Okay, as it is starting here, the same is starting here. But we have 1000 milliseconds. Let's say 1 second for the first, 2 seconds for the third, 3 seconds for the third, and like four, and then fifth. So that is why this is supposed to. I have not run the function yet, but it is. I suppose this would be something like this. Okay, let's see if yeah. Okay. Yep. Guys, is it clear now, all of you? Okay. Okay. Thanks, Tabis, for putting up the question. That's a good one. Okay. I will come back to where we were, like not back end, obviously. So coming back to classes. Okay. Before I come to classes, let's go what I have for today is the most important one. Um, Okay. Constructor function, whenever called with a new keyword, created a object on its own. ठीक है, जब भी आप किसी न्यू कीवर्ड की हेल्प से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो फिर वो एक नया ऑब्जेक्ट बना के आपको रिटर्न कर रहा होता है, राइट? दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। और हमने कहा कि दिस एक फंक्शन जब भी रन करता है, तो देर इज इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट देर आर थ्री थिंग्स। एक तो खुद फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स, उसका रेफरेंस टू आउटर लेक्सिकल इन्वायरमेंट, और तीसरा होता है दिस कीवर्ड। ये तीन चीजें हमने बोल रखी थी। ठीक है, तो दिस तो है, ठीक है, दिस तो एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि वी सॉ दैट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन व्हेनेवर यू यूज न्यू, दिस वाज व्हाट द प्रॉपर्टीज वाज असाइंड। दिस को ही प्रॉपर्टीज असाइन हो रही थी किसी नए ऑब्जेक्ट में। और दिस पॉइंट किसको कर रहा होता है? जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है, दिस उसी को पॉइंट कर रहा होता है। दैट इज टोटली फाइन विद नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस के लिए वो सारी बातें सही हैं। Now comes the arrow function expression. Okay. An arrow function expression is a compact alternative traditional function expression that is limited and cannot be used in all situations. First thing first, cannot be used in all situations and is limited. If you remember, we didn't create a constructor using arrow function. हमने arrow function की help से constructor नहीं बनाया, हमने normal function की help से constructor बनाया। बट इफ यू रिमेंबर, बाकी सारे केसेस में किसी नॉर्मल फंक्शनैलिटी या फिर किसी कॉल बैक में हम उसको पास, नॉर्मल फंक्शन पास करें चाहे कॉल बैक पास करें, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जहां पे दिस की बात आती है ना, दिस दिस कीवर्ड की, वी डू नॉट यूज एरो फंक्शन। क्यों? सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड ट्रेडिशनल फंक्शंस, and as well as some limitations. Arrow functions don't have their own this arguments or super and should not be used as methods. ठीक है, तो बेसिकली दिस कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सो वेयर इज दिस कमिंग इन एरो फंक्शन? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, जो भी उसका पेरेंट होता है वो दिस उससे शेयर कर रहा होता है। ठीक है, उसका खुद का कोई दिस नहीं होता, वो ऊपर से शेयर कर रहा होता है उससे। आगे, एरो फंक्शन डोंट हैव एक्सेस टू अ न्यू टारगेट कीवर्ड। ठीक है, सो ऑब्वियसली मतलब कि जहां पर भी न्यू की बात होगी वहां पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एरो फंक्शन आर नॉट सूटेबल फॉर कॉल अप्लाई बाइंड। कॉल अप्लाई बाइंड के लिए सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज कॉल अप्लाई बाइंड कब कर रहे होते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी फंक्शन से बाइंड कर रहे होते हो।
और उस फंक्शन में दिस कीवर्ड यूज हो रहा होता है। ठीक है, देखते हैं। वी हैव द थिंग्स ओवर हियर। ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। एरो फंक्शन कैन नॉट बी यूज एज कंस्ट्रक्टर, क्लास में कंस्ट्रक्टर के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एरो फंक्शन कैन नॉट यूज ईल्ड विद इन इट्स बॉडी। ठीक है, ईल्ड आप देखना। ठीक है, इसको जनरेटर फंक्शंस भी बोलते हैं। लाइक इट्स अ बोनस। ओके, इफ यू वांट टू सी अदरवाइज इट्स फाइन। ओके, सो ठीक है, ये तो क्लियर है। वी ऑलरेडी नो दिस पार्ट। द वर्किंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स में ऐसे वर्क करेगा एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो गेस have we like we have discussed these things, right? Syntax part, guys. Okay, okay, सही काफी सही। ठीक है, so okay, what else syntax, basic syntax, okay, advanced syntax also। to return an object literal expression आपको इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में करना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ करली ब्रेसेस करोगे तो ये कंफ्यूज होगा कि ये फंक्शन वाला करली ब्रेस है कि ऑब्जेक्ट वाला करली ब्रेस है, राइट? सो वेन एवर यू वॉन्ट टू रिटर्न अ ऑब्जेक्ट, आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में रैप करना पड़ेगा करली ब्रेसेस को, देन ओनली इट विल वर्क। Arrow functions used as method. As stated previously, arrow functions expression are best suited for non-method functions. Non-method function मतलब कि डेटा मेंबर्स के तौर पे इसको हम यूज नहीं करे होंगे। ठीक है, मेथड्स के तौर पे इसको यूज नहीं करते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू यूज देम एज मेथड्स। सो हमने क्लास में इसको असाइन किया। ठीक है, दिस डॉट आई, ये फंक्शन भी दिस डॉट आई प्रिंट कर रहा है, ये भी दिस डॉट आई प्रिंट कर रहा है। ओके, एंड दिस प्रिंट कराना चाह रहे हैं हम लोग। सो ऑब्जेक्ट डॉट बी प्रिंट्स अनडिफाइंड एंड विंडो और द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ये क्या बात कर रहा है? लेट्स सी दिस। सो लेट्स कॉपी दिस एंड सी यूज स्ट्रिक्ट इज हियर। ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट मोड में हम ये सारी बातें करेंगे। ओके, सो लेट्स पेस्ट दिस हियर। ओके, नाउ ओके, सो ऑब्जेक्ट डॉट बी, किसी फंक्शन का दिस किस पे डिपेंड कर रहा होता है? आप किस तरह से उसको कॉल कर रहे हो, राइट? आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करोगे तो दिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। गेस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, देखते हैं इसको। एक फंक्शन बनाया न्यू फंक। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया। ओहो, मैंने एक फंक्शन बनाया न्यू फंक। ओके, एंड इनसाइड दिस आई एम डूइंग कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, मैं दिस प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज माई न्यू फंक्शन। मेरा दिस किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। कैसे प्रूव करते हैं इसको? अगर मैं न्यू फंक कॉल करूंगा, ओके, अगर मैं न्यू फंक कॉल करूंगा, सी, तो दिस इज पॉइंटिंग टू विंडो। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, विंडो डॉट न्यू फंक। जो भी फंक्शन आप यहाँ पे लिख रहे हो, इट इज असाइन टू विंडो इटसेल्फ। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है ना, तो एवरीथिंग इनसाइड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इज असाइन टू ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो आप इस फंक्शन को ऐसे कॉल करो, चाहे विंडो की हेल्प से कॉल करो, एक ही बात। ओके, अगेन लेट्स चेंज द पॉइंट। वी हैव अ ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, ओबीजे है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे। अब इस फंक्शन को ओबीजे की हेल्प से कॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस न्यू फंक्शन को ओबीजे की हेल्प से कॉल करने की कोशिश करते हैं। सो न्यू फंक डॉट, ठीक है, कॉल, कॉल मेथड यूज करते हैं और कॉल में ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ओबीजे डॉट न्यू फंक तो कर नहीं सकते, बिकॉज न्यू फंक इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ओबीजे। तो हमें कॉल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर बाइंड करना पड़ेगा। ओके, फिर इसकी हेल्प से मैं कॉल करूंगा। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। यही सेम फंक्शन
अभी विंडो प्रिंट कर रहा था, अब यही सेम फंक्शन अभी ऑब्जेक्ट प्रिंट करा, तो वट एवर यू आर कॉलिंग द फंक्शन विद, वो उसी को प्रिंट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ओबीजे डॉट बी जो है एक एरो फंक्शन है। ठीक है, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के दिस नहीं होते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन डज नॉट हैव दिस। इट मीन्स दैट अगर मैं ये करूं तो ये अनडिफाइंड होना चाहिए, दिस डॉट आई अनडिफाइंड होना चाहिए, और ये दिस विंडो को इसलिए पॉइंट कर रहा है बिकॉज ये आउटर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे, तो जो भी इसका पेरेंट होगा ना, जो भी इसका पेरेंट होगा वो उसको रेफर करने लगता है, तो वो दिस उसे शेयर करने लगता है। ओके। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? कंसोल डॉट लॉग। ओके, ठीक है, अब इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। हाँ, ओके। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज तो नहीं देगा। ओके, लाइक पॉइंट ये है कि इसको मेथड्स के तौर पे यूज किया ही नहीं जा सकता। ये ना दिस को दिस डॉट आई कर रहा है और ना ही ये आई को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, ठीक है। सो इसका मतलब ये बाइंड भी नहीं हो सकता, एज अ मेथड यूज नहीं हो सकता, मतलब क्या ऑब्जेक्ट में आप रख ही नहीं सकते, तो इसको आप बाइंड अप्लाई कॉल भी नहीं कर सकते इसके साथ। ओके। सो ये चीज़ें ध्यान रखनी है एरो फंक्शन के केस में। ठीक है, ये चीज़ तो मतलब ठीक है, वो सेम फिर से ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, व्हाट विल हैपन। um what else, do we have anything else? Traditional function add event listener। ठीक है, एरो फंक्शंस यूजिंग सेट टाइम आउट, वी हैव यूज लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, हमने इवेंट लिसनर्स में सेट टाइम आउट में बहुत बार एरो फंक्शन यूज किया, लाइक वाई जस्ट सेट राइट कि हमने एरो फंक्शन यूज किया है ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में, बट कहाँ यूज नहीं करना, जहाँ पे बाइंडिंग की बात हो रही है। नो बाइंडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट्स? Okay, let's see this. Not such a big thing. ठीक है, small ही है। A B C। Okay, console dot log। ठीक है, arguments। ठीक है, arguments। Okay, let's call this function, so arg function। ठीक है, 045। Okay, see this, arguments is बाइंडेड टू द फंक्शन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है हमारे फंक्शन की, जिसके अंदर, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर गाइस, क्या मिल रहा है हमें? बिल्कुल सही बात है। सो व्हाट द, जैसा नाम है वैसा ही, जो भी नाम है हमारे पास वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और मैं लिख दूं आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स जीरो नॉट इक्वल्स टू प्लस 7, सो क्या प्रिंट होना चाहिए गाइस अब? ओके, एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज आर्ग्यूमेंट जीरो इज बेसिकली, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जीरो मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट जो कॉली फंक्शन है। ओके, फिफ्थ ऑब्जेक्ट सिंबल आइटरेट है। ठीक है, ओके, विल सी दिस लेटर। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू डिस्कस। ठीक है। अच्छा, फिर ये एरो फंक्शन में है कि नहीं, लेट्स सी दिस। सो
Arrow arg function. Okay. Arguments. Okay. Invalid destructuring assignment target. Okay. So is this due to this argument? Let's see. Hmm, what's wrong? Is this anything wrong here? Invalid destructuring assignment target. Okay, this is strange. So let function. Okay, let me write it again. So 1 comma or 2 comma 1, let's say. Oh, okay. Really sorry, guys. I have to pass variables, right? I have not to pass one and two. Okay. So argument arrow argument function. Let's do 3 comma 4 and let's see. So arguments is not defined. Okay. So we do not have such properties in over here. So no binding of arguments. Okay. So use of new operator. So foo is not a constructor. Obviously, foo is not a constructor. Use of prototype. Acha. So prototype is also not there for. So since constructor is not there, so prototype is not there. Both are the same thing, right? And returning object literals, we have already seen this part. Okay, line breaks. Okay, so like please go through it. Okay, so rest I guess is easy one. So this is what was something of left behind we had to discuss. Okay, mdlink. Okay, so binding in arrow function. Okay, please have this. Did it go? Yeah. Okay, coming back to the point. Where were we? So classes and inheritance were completed last day. Okay. So now comes things which we have to discuss. Okay. So client server architecture is here, and okay. So yeah. So should we start with this? Okay. Let's do a quick recap, and then we are good to go. We'll just start with synchronous JavaScript is synchronous and all those sort of things. Okay, so this was a class, this was a constructor, and the role of constructor was basically to create a object. Okay. Um, okay. Okay. So let's have a quick recap of that also. Mm-hmm. 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 Okay. Okay.
Let's see that part. Okay. I, okay, so let's just have a quick recap and then we'll move to that. So there's a class. So we have class student, then we have the constructor. Okay, and this is the syntax. So you have to just once you use it, you will be used to the syntax. ठीक है, कंस्ट्रक्टर में आप रोल नंबर नेम पास कर रहे होते हो एंड यूज दिस कीवर्ड टू डू दिस एंड दैट्स इट. ओके, आपको अलग से प्रोटोटाइप में फंक्शन असाइन नहीं करने पड़ते हैं, आप डायरेक्टली फंक्शन लिख सकते हो और वो काम कर देगा आपका. देन दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर फंक्शन. ठीक है, सो ये इसी तरीके से हम फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं एंड दिस इज हाउ वी मूव ऑन. ओके, then we have the constructor. uh, okay, then so we created another class, we extended the previous class. Okay, and also talked about the super keyword. So super keyword is for calling the parent class methods, functions and the constructor. ठीक है, so जब आप super को डायरेक्ट कॉल करते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो. अदरवाइज अगर आपको किसी फंक्शन को स्पेशली कॉल करना है अपने पेरेंट के, तो आप उसके नाम से कॉल करते हो. ओके, सो इफ यू हैव टू the functions are of same name from inside your like the current class and the parent class, so आपको super keywords से उसको आप access कर सकते हो and this thing remains the same. Okay, so ये हमारी classes है. Any doubts in this one, guys? Any doubts in classes? Okay. Okay, so let's talk about closer once more. So we yeah. No, you do not have to. Not heard of something like that, but yeah, that's I don't see if that is the case. But yeah, let's see it. So okay, any other changes? Nope. Save it. Okay, let's copy path. Student is not defined teacher dot. Oh yes, so line number 46. Do we have any issues? Line number 46. Oh, obviously. Any other occurrences? Nope. Okay, all good. Why is this happening again? Oh, it was not saved. Okay, so all good and fine, right? Yep. Okay, coming to the closer. So we created a function in the last class, if you remember. We had a function with name function one. We had a function name function two. Inside that, we have a third function, function four. So this was the innermost nested function, if you remember. Okay. Now let's dig it one by one. So coming to function one, before that, let's go to the global context. We have a variable which is a equals to 10. Coming to function one, we have a variable b equals to 20, and then comes a function with variable c is equals to 30. Okay, so three variables, three different contexts. Now we are incrementing the values b, c, and a. We are printing the values. Okay, inside that we have a function 4. Okay, with another, so we can have a local variable here also, that's not the thing we have to worry about. Okay, now the function 4 is being returned by function 2. Okay, and function 2 is being returned by function 1. It means that if I want to execute function 1, I can directly call function 1. But if I want to execute function 2, I have to execute whatever I am getting in a return of function 1 call. You see this? Function 2 is returned. We call the function 2 function. Now
B- Here comes the point. If I want to run function number 4, which is the innermost function, I have to run whatever I am getting in return of function 2. Again, line number 58 will be returning the nested last nested function, and I can make the call to it. Now, here comes the point. Everything is working, like all the variables are accessible. The doubt of the wish is I can access the local variable of function for very correct. Now this function saves its scope. Okay, this function saves preserves the scope. Okay, now the variable I have over here is this one. Okay, so the variable is c. Okay, now since I am using c here, it will preserve the scope. Okay, also I am using a also here. Okay, so I'm using a also here. It means that global will be there. Obviously, global never gets popped out of a stack. Now comes b, which is not in the direct parent, it is in the grandparent. So that is also being used here. The point is, this only has a reference to its outer context, right? Okay, okay, makes sense. So whenever we are preserving the scope, let's say that JavaScript tries to preserve this. So if it will preserve this, it has to preserve this. And even okay, let's do one thing. Do not use these variables. Okay, so do not use any variable in the direct parent. Also, let's not use C here. Okay, let's see what is happening. Well, okay, I made the change in the wrong place. So let's print ABC over here. Okay, and okay, let's not print B over here so that so B is here. Now my parent is not having B. Okay, let's say that key this function does not require this context. Okay, now it only requires the global and its context. Now function 4 on the other hand requires its previous, like its parent, its grandparent, and obviously the global context. Okay, let's see what is happening. It means that function 2 has nothing to do with function 1 because there is no b variable here, but function 4 has something to do with the function 1. Okay, so let's see this. Okay, so if we see this part, okay, line number, so what we are interested in, we are interested in line number n 36 with the left arrow. Okay, so it is accessing all the values. And why is it happening, guys? Now the point is this context will be saved. Why it will be saved? Because indirectly b is inside function 2 only. Have a close look. Where is b currently? Okay, I know it is in function 4, but function 4 is in, yes, yes. So context has to be saved to run this function, right? So that, yeah, tell. Okay, so b is saved for function 2, right? The question is this: why it is getting saved for function 2, right? Okay, so b will try to okay, so it will try to look up in function 2. Okay, because it has the context of function 2, so it will try to look if there is some property over there or not. Now function 2 will say I do not have the property, but let me check my outer context. Okay, so function 4 does not have to deal with directly with function 2. Sorry, function 1.
it will. Yeah. Mm-hmm. Okay. So, but yeah, like that is for function 4, but function 2 will form closure, right? Because b's, yes, yes, because b is indirectly inside function 2. Okay. Remember that like prototype thing. So if you do not have the method, it is checking upwards, then you it is checking upwards. So prototype, so it is finding methods up in the chain. Okay, let's have a, do we have any MDN reference for this one too? But it's the same thing. Okay, so multiple closer trailing closer violation. I'm not sure about are we going with the right thing or not. Okay, so multiple closers, obviously JavaScript. Okay, it says that is the combination of bundled together with references to its surrounding state, the lexical environment. In other words, a closure gives you access outer function scope from an inner function. Okay, every time a function is created at function creation time. Okay, okay. So it has. If we see this statement, this has nothing to do with a variable. In JavaScript, closures are created every time a function is created at function creation time. It doesn't have to do with anything with either the variable is being used or not. Mm-hmm. 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 Correct. Very correct. Yes. Yes. Obviously. So the parent will be inside that reference. So these are references, right? So you are just going up the chain to find that property. This is what it is happening. So, okay, what happens? Let's see this. Let's see what happens exactly. How it is. So, what do I mean by searching up the scope? Now, tell me what will happen if I do let c is equals to 10. So, which c will be accessed? Reinitializing. Okay. At line number 38, at line number 38, and at line number 30. So, what will be the value of c at both these lines? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, it means that, yeah, Tushar. Uh, mhm. Yes. Okay. Hmm. Okay, Tushar, are you sure? कि error देगा ये? Okay. So what does curly braces denote, guys? Curly braces क्या denote करता है? Okay. So function का scope नहीं होगा अलग से. Okay. Did we miss any console statement? कुछ console miss किया क्या हमने?
this one. Okay, see this. So no errors, I guess. Guys, ये दूसरा स्कोप है ना? हाँ, तो ये तो दूसरा फंक्शन है ना? इसको इससे क्या मतलब है? ये तो स्कोप ही चेंज हो गया। इसकी लुकअप लाइन नंबर 38 जब सी को खोजेगी तो सबसे पहले अपने फंक्शन के अंदर खोजेगी कि फंक्शन के बाहर खोजेगी? यहाँ तो कभी पहुंचेगी ही नहीं। आप आप ऊपर कब जाओगे? आप ऊपर कब जाते हो प्रॉपर्टीज के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। रिमेंबर प्रोटोटाइप में क्या हुआ था? मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू हो सकती है सेम, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी हो सकती है और वही चीज प्रोटोटाइप में भी हो सकती है। तो क्या चीज प्रिंट होगी? जो खुद की प्रॉपर्टी, हाँ यस, जो खुद की है वो पहले प्रिंट होगी ना। हम्म, सो यस यस, तो ये तो एक अलग स्कोप हो गया ना, करली ब्रेसेस आ गया है यहाँ पे। सी, स्कोप बदल गया। फंक्शन के पास तीन चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? लोकल वेरिएबल्स, दूसरा क्या होता है? दिस कीवर्ड, तीसरा क्या होता है? रेफरेंस टू आउटर कॉन्टेक्स्ट। यही क्लोजर है ना, रेफरेंस टू आउटर कॉन्टेक्स्ट। ये तीन चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? लोकल वेरिएबल्स, राइट। उसके बाद आपका दिस, फिर रेफरेंस आता है। रेफरेंस बाद में आएगा, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ। हाँ, तब तो सेम स्कोप में हो जाएगा ना। हम्म। हाँ, आप यहाँ पे भी कर लो, यह भी एरर देगा। ठीक है। सो लुकअप, ये रेफरेंस तभी चेक करेगा जब खुद नहीं मिलेगी इसको। ठीक है, तब तक यही जाएगा। और यही काम यहाँ पे हो रहा है, और इस ये सेम काम हो रहा है। इसने बी को पहले अंदर यहाँ खोजा, बी मिला नहीं। फिर बी को इसने इसमें खोजा, इस फंक्शन ने भी डिनाई करा। बट अब ये इस फंक्शन की जॉब है कि ये ऊपर कहेगा। ठीक है। यस 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 यस, अब इसके पास है आउटर कॉन्टेक्स्ट। है, तो ये प्रॉपर्टी अब ऊपर सर्च होगी इसमें। म- मेरे पास वैल्यू है या फिर मुझे उस वैल्यू की एक्सेस है, एक ही बात है। फंक्शन टू के को एक्सेस है इसकी, हो गई। तो ये इसके पास नहीं होगा तो ऊपर देखेगा, खुद होगी तो खुद भेज देगा। यही, अच्छा, ये सेम डाउट हमें ग्लोबल वेरिएबल के साथ क्यों नहीं आ रहा? ये तो सबसे बाहर है, ये तो पेरेंट का भी पेरेंट है। तो फिर उसके लिए हमें क्यों नहीं डाउट आ रहा कि अब ये कहाँ से चला आया अंदर? ये तो 3 लेवल की नेस्टिंग में घुसा चला आ रहा। यस 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 यस, अगर ये वेरिएबल यहाँ नहीं होगी तब तो नहीं हो सकती कहीं, क्योंकि यही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है। यस 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 यस। ठीक है। ओके, वो स्टोर करता है, बट अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो फिर वो गार्बेज कलेक्ट होगा। बट हाँ, वो स्टार्टिंग जब भी कोई फंक्शन क्रिएट होती है, उसमें रेफरेंस टू आउटर कॉन्टेक्स्ट होता है उसका।
जब वो क्रिएट होता है तब होता है। मतलब कि जब तक वो रन कर रहा है तब तक सेव होगा उसके पास, आप यूज करो चाहे ना करो, तो वो हमेशा ही क्रिएट होता है, हमेशा। वो वेरिएबल हो भी तो भी, नहीं हो तो भी। हम्म। यस, यस, यस। हाँ, हाँ, स्कोप्स रहते हैं, स्कोप्स रहते हैं तभी भी। यस, यस, यस। हाँ, ओके। हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम है। हाँ, ओ अच्छा, ओके, सो आप कह रहे हो कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तब। हाँ, तब कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लोकल वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा मेमोरी में, क्योंकि उसकी रेफरेंस नहीं है ना। गार्बेज कलेक्शन किसका होता है? अगर कोई लिंक लिस्ट की नोड आपसे छूट गई तो गार्बेज कलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने हेड पॉइंटर खो दिया तो पूरी लिंक लिस्ट गई ना। तो वही काम यहाँ पे होता है, ये रेफरेंस सेव कर लेगा, आपको चाहिए अगर आप यूज़ करोगे तो ठीक है, अदरवाइज ये कलेक्ट हो जाएगा, गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा इसका रेफरेंस। ठीक है। और बाकी तो फंक्शन जब खत्म होता है तब तो लोकल वेरिएबल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। ऑप्टिमाइजेशन मुझे भी देखना है, लाइक हाउ लाइक मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में। वो एक अलग ही टॉपिक है, अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है वो। बट हाँ, मतलब वही है। ओके, इसको आप और भी देख सकते हो। सो विच ये कह रहा है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग व्हिच डिस्क्राइब्स हाउ अ पार्सर रिजॉल्व्स वेरिएबल नेम व्हेन फंक्शंस आर नेस्टेड। The word lexical refers to fact that lexical scoping use location where a variable is declared within source code to determine where that variable is available. Okay, nested function have access to variables declare in their outer scope. उनके outer scope में accessible होती है रन। ओके, ठीक है, एक ही बात है। चीज़ों को बार बार रिपीट करा हुआ है इसने। सो ओके, ठीक है, गो थ्रू इट, ट्राई करो आप। ओके, चीज़ों को समझो कैसे वर्क करती हैं। ओके। ओके, यही चीज़ हमने अभी डिस्कस करी, राइट? अ कॉमन मिस्टेक इज नॉट रियलाइजिंग दैट in the case where the outer function is itself a nested function, access to the outer function scope including the enclosing scope of outer function, effectively creating a chain of function scopes to determine consider the। ओके, ठीक है, मतलब वही है। अभी तो हमने बात कर लिया, फिर से बात नहीं करेंगे इस पर। ठीक है। मतलब ठीक है, आप देखना इसको। नॉट टू कंफ्यूज, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। बस इतना समझो, लुकअप होता है चेन के ऊपर। जैसे प्रोटोटाइप में आप खुद से कैपिटल ओ ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में चले जाते हो, एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन आपको डायरेक्टली एरे में नहीं दिखती है, बट वो कहीं ना कहीं तो है। तो कहाँ होती है वो? प्रोटोटाइप की चेनिंग में होती है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में, अच्छा नहीं, जावास्क्रिप्ट में तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सी प्लस प्लस में है। ठीक है, मल्टीपल नहीं, मल्टी सॉरी, रियली सॉरी, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट करना। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल मतलब कि पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, उसके भी पेरेंट एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें जैसे जावा और सी प्लस प्लस में, वैसे यहाँ पर भी। ठीक है। ओके, ठीक है। सो वन लास्ट थिंग फॉर टुडे, सो दैट वी कैन पुट सो वी हैव अ टॉपिक टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। हमारे पास एक टॉपिक रहेगा। टॉपिक इज async js dot js। Okay, let me make it HTML. Async js dot HTML। ओके, ये हुई स्क्रिप्ट। ओके, एंड ओके,
सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो वी ऑलरेडी नो अबाउट सेट टाइम आउट फंक्शन. हमने काफ़ी बार उसको इस्तेमाल कर लिया और हमने चीज़ें देखी. ठीक है. सो कुछ करते हैं. सो आई एम अ कंसोल. आई एम अ कंसोल. आई एम. ओके. लेट्स पुट अ नंबर इन. ठीक है. ओके. लेट्स पुट सेट टाइम आउट. ठीक है. सेट टाइम आउट. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे. जस्ट अ कंसोल डॉट लॉग. ओके. और इस पे लिख देंगे आई एम टू. ओके. और यहाँ पे हमने दे दिया 1 सेकेंड का डिले. और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग एंड आई एम 3. ओके. Okay, let's run this function again. We see that 1 and 3 are printed और 2 print हुआ 1 सेकेंड बाद. So guys, all of you are getting the point. ये ऐसा क्यों print हो रहा है? Guys, are you with me? ठीक है. क्योंकि 1 सेकेंड की डिले है तब तक ये वाली लाइन चल जाएगी. राइट. अच्छा. लाइक कैन वी ड्रॉ द कंक्लूजन कि जावास्क्रिप्ट ने इसके कंप्लीट होने का इंतजार नहीं किया. अगर इसके कंप्लीट होने का इंतजार करता तब तो 2 पहले प्रिंट होता. गैस, आर यू गेटिंग द पॉइंट. इसने 1 सेकेंड ब्लॉक नहीं किया खुद को. गैस, ये क्लियर हो रहा है क्या? क्या बोल मतलब जो लाइन मैं बोल रहा हूँ. इट मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक फंक्शन रन कर सकता है. इट मीन्स दैट जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड. थ्रेड्स मतलब क्या होता है? थ्रेड्स मतलब प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन. या. ठीक है. तो एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर सकती है. या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी. ठीक है. तो सबसे पहली बात, एक ही सिंगल थ्रेड है उसके पास. तो या तो ये रन करा रहा होगा या तो ये रन करा रहा होगा. बट एक चीज समझ नहीं आई. इफ इट हैज स्किप्ड दिस सेट टाइम आउट फंक्शन, फिर इसको पता कैसे चला कि ये कंसोल रन करना है, कि ये वापस गया क्या? एंड वी ऑल्सो हैव लर्न दैट जावास्क्रिप्ट रन्स लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. चीज़ें पास होती हैं. सो इफ जावास्क्रिप्ट हैज रीच दिस लाइन, so how come after 1 second this is getting printed? Okay. First thing, single threaded. सेकेंड थिंग, नॉन ब्लॉकिंग, मतलब कि खुद को ब्लॉक नहीं करता है. ठीक है. सिंगल थ्रेडेड, नॉन ब्लॉकिंग. ये दोनों, सो दीज टू प्रॉपर्टीज वी हैव सीन, वो हमें दिख रही है कि नॉन ब्लॉकिंग भी है. ओके. कुछ और भी इंक्लूड करना है क्या? ओके. अभी नहीं. ओके. ऑल्सो ऑल्सो ठीक है. नॉन ब्लॉकिंग है एंड वी हैव अ सिंगल थ्रेड. हाउ इट इज रनिंग, दैट्स अ क्वेश्चन. ओके, लेट्स डू वन मोर थिंग. ठीक है, एक और काम करते हैं. सो लेट्स रिमूव द डिले. डिले रिमूव कर देते हैं. व्हाट शुड बी द आउटपुट नाउ गाइस? अब क्या होना चाहिए आउटपुट? 1 2 3. राइट. गाइस, ताबिस, निखिल, गाइस, एनी इनपुट्स फ्रॉम यू गाइस? मैंने अब 0 मिली सेकेंड डिले कर दिया. सो व्हाट शुड बी इन द कंसोल? गेस. गेस ही करना है बस. हम्म. ठीक है. हम्म. ओके. हम्म. ओके. ओके. ओके.
ओके, कंसोल पे चलते हैं और एक हार्ड रिलोड करते हैं इसको। देर इज नो चेंज इन द ऑर्डर। ऑर्डर में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये तो दिख रहा है कि 0 डिले सेकंड है। ये तो दिख रहा है बिकॉज़ अब कोई टाइम नहीं लग रहा, इफ यू सी। बट ये फिर उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ। इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग different with set timeout. Okay, it is not working as these function are working. ठीक है, एंड यू विल बी थिंकिंग सर सिंपल कंसोल है इस वजह से। सो लेट्स हैव अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन माई फंक। ओके, एंड एंड नाउ एंड दिस फंक्शन विल हैव द कंसोल। ठीक है, ये कंसोल इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं सो दैट एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो डिले है वो तो आए। लेट्स सी, लेट्स कॉल दी फंक्शन। ओके, अब मैंने फंक्शन लिख दी। लेट्स रिफ्रेश दिस अगेन। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं। नो चेंज अगेन। ठीक है, फंक्शन से भी कोई बात नहीं बनी। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज वी कॉल जावास्क्रिप्ट एज सिंक्रोनस लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को सिंक्रोनस लैंग्वेज बोलते हैं बिकॉज द एग्जीक्यूशन happens the execution happens line by line. Okay, now if this is the case तो ये फंक्शन भी रन करना चाहिए। सो यस इंडीड दिस फंक्शन इज ऑल्सो रनिंग, बट दिस फंक्शन इज नॉट अ सिंक्रोनस फंक्शन। ये कोई सिंक्रोनस फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक फंक्शन बोलते हैं इसको। नाउ व्हाट इज एसिंक्रोनस? एनी पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एज asynchronous function in JavaScript. Any potential blocking operation is called as asynchronous function, asynchronous method. Potential blocking operation से मेरा मतलब, let's take an example of, okay, so do we know how much time it will take to load this page? It is taking 4 milliseconds. Let's try again. It is taking 3. Okay, it's taking 3 again. Okay, and ठीक है, like almost something like that. So this is what it is happening. So network call, but this is on my system, right? You cannot say that this will also take the same time. Okay, so अगर मैं इसकी like latency देखूं, so we have lots of latencies over here, right? So we have 816 milliseconds, 120 milliseconds, and lot of sort of things. This network call is also asynchronous operation because it is also potential blocking operation जो कि resource, sorry not resource, जो कि if JavaScript tries to wait for these kind of functions, काफी डिले होगा कोड में, राइट? लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस है। अभी तो ठीक है, 3G की स्पीड है, सो 4G की स्पीड है, एंड वी आर गेटिंग द पेजेस इन सेकंड। सो पहले क्या होता था, 10 सेकंड 12 सेकंड के लिए पेजेस लोड होती थी। सो डज दैट मीन वी शुड बी वेटिंग फॉर 10 12 सेकेंड्स? मतलब कि अगर हमें कंसोल प्रिंट कराना हो फंक्शन कॉल के बाद, नेटवर्क कॉल के बाद, सो वी शुड वेट 10 12 मिली सेकेंड्स, 10 12 सेकेंड्स? नो, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, वो अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। ओके, रीड अबाउट दिस एसिंक थिंग। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ो, नॉन ब्लॉकिंग, सिंक्रोनस एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, and gain some knowledge. Let's continue next week. Okay, so next week there are topics which are very interesting. Client server architecture, is asynchronous JavaScript, event loops. Okay, so these are very hot topics for current interview. And yes. Mm-hmm. 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 You can, so we already saw this three nested calls, right? So make a currying function from it. You can make a currying from function from nested functions, right? Okay, like just okay. So you already know the nested function, how to create nested functions. Do one thing.
Search for the curring part. Okay, try it out. Okay, trust me, you do not have to write any code because that's the same thing, nesting of functions. Okay, let me share the attendance sheet. I will do that in the next class. For today, it like for now, it's I want you guys to explore, right? I will surely do that. I will share all the links and other things with you. Okay, so uh, like this time, it's go and like explore whatever you get it. We if you are confused, we'll discuss it again. If you are getting clear, that's very nice. Okay. Yep. Okay, guys, I have shared the page. Please mark your attendance and let's meet next week. Bye.